Hello everyone, welcome in today's current affair topic. So this is me Praveen Chaubey. Let's start. So today I'm going to discuss one of the most important topic in our IR. This is related with your international relation where India and US again engage in one more defense agreement. And this time both trying to stop Chinese influence in Indo-Pacific region. Yes, we are talking about India and US to jointly manufacture interoperable Sonobuoys for Navy. Now, in your prelims, maybe they will ask you question, what do you understand by the term called Sonobuoys and what are the important application of Sonobuoys? So we'll discuss in detail about the Sonobuoys. Now here, India and US are collaborating to make sonobuoys that are needed to track undersea submarine. This sonobuoys is one type of your detectable device that can be used to identify the presence of submarines, their location. Okay, like Chinese submarine is more present in Indo-Pacific region. So this will help to identify their location, their position accurately, exact locations. Now there are two companies, one from US called Ultra Maritime and one from India called Indian Public Sector Undertaking Bharat Dynamics Limited. Both this company together will manufacture these sonobuoys, and that will be give a more important strategic significance to our Indian Navy. They can able to detect enemy submarines, ships, and their position. Now, as you see in this engage, this picture is a sonobuoys ka picture hai. And here in our National Security Advisor Ajit Doval with the US National Security Advisor called Jake Sullivan, they are discussing about how to process with this project. Now, this undersea instrument are niche equipment. Why this is very important? Because it will help to detect submarine lurking deep. Means sometime enemy ship is very secretly positioned somewhere in Indian Ocean and trying to collect all the information from India. इंडिया के नेवी की पोजीशन क्या है, इंडिया किस तरह का मतलब कि किस कौन से शिप्स इंडिया के किस पोजीशन में, they able to detect everything. So this sonar voice will help to identify the presence of these enemy ships. Okay, both countries are cooperating on high-end technology amid rapid expansion of Chinese naval presence in Indian Ocean. चाइनीज का प्रेजेंस जो इंडियन ओशन में काफी इंक्रीज हो गया है पिछले, अगर देखा जाए पिछले 1 डिकेड से, क्योंकि चाइना ने वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव जब से स्टार्ट किया है, तब चाइना का इंडिया के मोस्ट ऑफ द नेबरिंग कंट्री को जो प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो या किसी भी तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस कोई भी कंट्री इंडियन का नेबरिंग कंट्री का होता है, तो चाइना इज ऑलवेज हेल्प. नाउ एज यू सी इन दिस मैप, द प्रेजेंस ऑफ चाइनीज सबमरीन इन इंडियन ocean in different location. One, this is called the first, which called Djibouti. It is called Chinese Navy. Okay. Second is your Gwadar Port. Gwadar Port is in Pakistan. That is completely financed by China. Okay. One of the incoming coming years, this will be one of the strategic location. Then Djibouti is in Africa. Okay. Now this third one is called your Feduru Finolo Chinese Island. This is present in your Maldives. This also island is developed by China. And fourth one is called Port Blair. Now Chinese submarine enter in Indian Ocean through a Malacca Strait. This is strategic location. Then your Sunda Strait, and one is called Lombok Strait. These three important location, three important water bodies through which submarine of Chinese enter in Indian Ocean. Now, China is one of the biggest fleet in submarine, around 65. 65 Chinese submarines are present in different part of Indian Ocean and is now helping Pakistan with the technology. अब ये पाकिस्तान को भी इस तरह का सबमरीन्स को दे रहा, ताकि पाकिस्तान भी इंडियन ओशियन में, मतलब कि अरेबियन सी में सबमरीन्स को रख सके और इंडिया के ऊपर नजर रख सके. इट इज ऑल्सो इंगेजिंग इन बांग्लादेश. बांग्लादेश को भी आपको पता है, बांग्लादेश को काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहा है चाइना. ओके, उसको सबमरीन अभी रिसेंटली सबमरीन भी सेल किया. On the eastern edge, the Bay of Bengal is Myanmar, where China has foothold. Myanmar is also one of the important countries जहां पर चाइना का काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है. तो इसको देखते हुए आपको पता है कि इंडिया एंड यूएस बोथ आर एंगेज इन अ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कॉल्ड क्वाड आल्सो. दिस क्वाड का भी सेम पर्पस है, टू काउंटर चाइना. ओके, प्रेजेंस ऑफ चाइना इन इंडो पैसिफिक रीजन. उसके बाद ये सबमरीन जो सोनो बॉयज है, ये भी बनाया जा रहा है. ना फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दी मीनिंग ऑफ दिस कॉल्ड सोनो बॉयज होते क्या. तो सोनो बॉयज होते क्या, इट्स आर स्पेशलाइज्ड डिवाइस, एक तरह का डिवाइस होता है, primarily anti-submarine warfare. Okay, anti-submarine warfare that can detect, classify and track submarine underwater. इसको अंडर वाटर में या सस्पेंशन हो सकता है या डीप अंडर वाटर में जा सकता है, जो कि प्रेजेंस ऑफ सबमरीन, अगर आसपास कहीं भी सबमरीन से पता है उसके मोटर वॉइस आते हैं, उससे बहुत सारे ये निकलते हैं
you can say waves निकलते हैं, that can be able to identify the sonobuoys, और वो एग्जैक्ट कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, क्या पोजीशन है, उसको इजिली ये ट्रैक कर सकता है। इसको कहते हैं एंटी सबमरीन वारफेयर। नाउ दिस डिवाइस आर ड्रॉप फ्रॉम द एयरक्राफ्ट और शिप इनटू द सी। हो सकता है एयरक्राफ्ट से इसको ड्रॉप किया जाए, या यहाँ पर कोई शिप प्रेजेंट है उससे भी इस डिवाइस को ड्रॉप किया जा सकता है अंडर द वाटर, और इट विल बी सस्पेंडेड। ये सस्पेंडेड रहेगा, तैरता रहेगा, तैरते रहेगा, और इससे क्या होगा, दिस विल एबल टू एब्सॉर्ब दी ओके साउंड दैट इज कमिंग फ्रॉम द सबमरीन। आसपास में जो भी सबमरीन उससे जो भी साउंड आएंगे उससे क्या होगा, इसको डिटेक्ट करेगा और ये सिग्नल दे देगा हेड ऑफिस में। सोनोबा इज इक्विप्ड विद द हाइड्रोफोन्स ओके और एक्टिव सोनार ट्रांसड्यूसर्स, और मॉनिटर साउंड वेव इन द वाटर, ट्रांसमिटिंग डाटा बैक टू ऑपरेटर ऑन द सरफेस। अब जैसे शिप में बैठकर इंडियन नेवी उस चीज को देख रहे हैं कितने डिस्टेंस पे एनिमी शिप्स प्रेजेंट है, कहाँ पर कौन सबमरीन प्रेजेंट है, पाकिस्तानी या चाइनीज, तो वो इजिली इसको इससे आइडेंटिफाई हो सकता है। अब इसके भी डिफरेंट टाइप्स है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दे विल आस्क यू डिफरेंट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोनोबॉयज। तो सोनोबॉयज होता है एक पैसिव होता है, एक एक्टिव होता है, और तीसरा होता है स्पेशल पर्पस सोनोबॉयज। तो पैसिव सोनोबॉयज क्या होता है, दिस डिवाइस लिसन फॉर साउंड जनरेटेड बाय द सबमरीन सच एज इंजन नॉइज और अदर मैकेनिकल साउंड, बिकॉज जब सबमरीन चल तो उसमें भी कुछ इंजन होंगे, और उससे क्या होंगे साउंड जो निकलेंगे उसको ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। दे डू नॉट इमिट साउंड वेव। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे विल आस्क यू क्वेश्चन what are the different types of passive or active sonobuoys, what are the major difference between these two. So you have to remember, passive sonobuoys do not emit sound wave, they themselves making them stealthy and harder for submarine to detect. It is help to detect this submarine, it not emit the sound wave. One thing is important to remember here, the difference between passive sonobuoys and active sonobuoys. Now these active sonobuoys emit sound pulses okay into the water and listen the echoes okay that bounces off object like submarine. So it's like a something called active that also emit this sound, and it produces a sonar. Okay, this type of one wave that collide with the surface of the submarine and return back. So this give a more precise location information. अगर हम इन टर्म्स की बात करें कि प्रिसाइज लोकेशन सबसे बेस्ट कौन बता पाता है, सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव सोनार ओके। लेकिन इसका एक डिमेरिट भी है, डिमेरिट ये है कि इट कैन इजिली आइडेंटिफाई, इसका इसके भी पोजीशन को इजिली एनिमी शिप्स आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन पैसिव के साथ नहीं है, क्योंकि पैसिव जो सोनोबॉयज है दैट नॉट एमिट एनी टाइप ऑफ साउंड, ये सिर्फ एब्जॉर्ब करता है साउंड को और वो डिटेक्ट करता है, लेकिन कितने डिस्टेंस पे है, कितना एक्यूरेसी लेवल है, दैट इज नॉट एज एक्यूरेट एज कंपेयर टू एक्टिव सोनार। ठीक है, दोनों का अपने अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, बट इंडिया में जो सोनोबॉयज परचेज होने जा रहा है, जो मैन्युफैक्चर होने जा रहा है, दैट विल बी बोथ पैसिव सोनार और एक्टिव सोनार, दोनों ही उसमें काम करेंगे। नाउ देयर इज सम स्पेशल पर्पस सोनोबॉयज दैट इंक्लूड a design to environmental monitoring okay for environment purpose to identify the water temperature कितना है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को भी देख सकते हैं, we able to identify the salinity of the water and the depth of the water can also be helped by special purpose sonobuoys. So there are three types of sonobuoys that you remember for exam point of view. ऑपरेशन लाइफ की बात करें तो सोनोबॉयज आर यूज ओनली वन टाइम, इसको सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है, सो दैट्स व्हाई इट्स लाइफ टाइम इज बिटवीन आवर्स, फ्यू आवर्स टू सेवरल डेज डिपेंडिंग ऑन द मिशन रिक्वायरमेंट एंड बैटरी लाइफ कि क्या मिशन है। अगर सपोज इफ यू वांट टू डिटेक्ट अ सबमरीन, चाइनीज सबमरीन आल्सो हैव वेरी हाई टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं कि वो टेक्नोलॉजी नहीं, हाई टेक्नोलॉजी है, दे आल्सो इक्विप्ड विद ऑल द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसको भी पता है कि अदर कंट्रीज क्या क्या डिवाइस को डिप्लॉय कर सकते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग देयर ओन सबमरीन, तो उसके भी तैयारी के लिए दैट मींस इंपॉर्टेंट टू लोकेट दिस टाइप सोनोबॉयज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, means you can say at least some 15 to 20 days, at least 2 to 3 weeks into the water, so that we able to identify a submarine of another country. So communication means it collect the data and transmit it to operator through a radio frequency. Now we have some recent modern sonobuoys that can also relay data via satellite communication for longer range of operation. Okay, so these are the some important point, basic point you should remember about the sonobuoys. Now application की बात करें तो application as you know anti submarine warfare के is very helpful because it may help in identifying the enemy ships or track enemy submarines. They play a critical role in maintaining naval security and in protecting the carrier strike groups. Okay. Now this also help in search and rescue if there is something happened, missing happened in something happened in Indian Ocean. So उसके में भी ये सर्च एंड रेस्क्यू में लाइक सुनामी जैसे केस आ गए, साइक्लोन्स कभी कभी इतने हिट होते हैं कि वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरे कोस्टल एरियाज में, उसमें भी सर्च एंड रेस्क्यू में भी ये काम करेगा। Oceanographic research means
we try to understand the bottom relief में different types of landforms है, sea mounts है, volcanic mountains है, and mid-oceanic ridges. So that required the research of mineral resources like we have polymetallic nodules, polymetallic sulfides present in Indian oceans. So that can be also helps to identify with the help of this type of device. So इसके बहुत सारे multi functions है, multi इसमें है कि strategies को we can use it. Now we talk about what are the important India's anti-submarine warfare capability. So we have a submarine fleet. Okay, submarine fleet as you see in this image. Okay, this can be easily like it's just like a submarine that can Indian Navy also deploy in Indian oceans. So it's called a Scorpion class submarine. It is advanced stealth feature capable of anti-surface and anti-submarine warfare. So we have a INS Arihant. Okay, we have a INS Arihant in India that is a nuclear-powered ballistic missile submarines. It providing a second strike capability and enhancing maritime deterrence. So this come under the submarine fleet and we called as a anti-submarine warfare. Now we have some surface ships that can be float on the surface of the water. This can also detect the enemy submarines very easily by just dropping this sonobuoys into the water that can be that can be just suspended in water and able to identify the sound wave, so whatever the sounds coming from the submarines motors. So we called as destroyers and frigates equipped with the towed array sonar system and anti-submarine rockets that we have a Kolkata class, Shivalik class. These come under the destroyers, okay, and frigates. Then we have a Kamota class corvettes indigenously built. Okay, it's called anti-submarine warfare corvettes with advanced sonar system, anti-submarine torpedoes, and rocket launchers. This all come under the feature of called Kamota class corvettes. Okay, then we have airborne anti-submarine warfare assets like P-81 Poseidon. Oh, okay, E-8I. This is called Advanced Maritime Patrol Aircraft with sonar buoys, anti-submarine torpedoes, long-range sensors. Then we have MH-60R Seahawk helicopter, multi-role helicopter with sonar system, torpedoes, missiles, and enhanced anti-submarine warfare operations. So we basically these two we purchased from USA. Okay, we purchased from USA, and that still means present at present time it's in Indian Navy, Indian Air Force are using these two devices. It's like an anti-submarine warfare that can help to identify Chinese and other countries submarine into the water. Then we have underwater detection system. In this, there are two types. One is called integrated underwater surveillance system that include a seabed sonar array and underwater surveillance for tracking submarine movement. Other is called towed array sonar. This is what recently India Nirakshi. Okay, this is called Nirakshi is called Seas Eye. It's called Seas Eye. Okay, so Nirakshi is one type of underwater detection system. This can be okay detect the presence of other type of ships and submarine of Chinese and other country. It is towered array sonar. It means long distance submarine detection system deployed on various ships. So this come under the category of underwater detection system. Now we have some different types of indigenous development like we have advanced torpedo defense system, okay, developed indigenously for enhanced defense against torpedo the threats. Then we have sonar system that were developed by organization like DRDO, okay, most important research and development defense research and development organization in India to enhance the underwater detection and tracking capabilities. We have some weapons like torpedoes that can be launched from the ship, okay, and it enter in the water and easily detect them. Then we have some rockets, anti-submarine rocket launchers deployed on ships for quick response capabilities. So these are some important strengths of India's Navy, okay, India's defense system that helps to identify, okay, means submarine and other ships of the enemy country. नहीं अब यहाँ पर क्या है कि there are some challenges. Okay, there are some challenges for future development of anti submarine warfare capabilities like operational challenges. क्या है operational challenge में कि we know Indian Ocean is very vast and deploying different types of sonobuoys in different location is one of the challenging. Sophistication of submarine technology because China के पास भी आज के समय China is टेक्नोलॉजी के मामले में कहें तो आज बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा, तो उसको चैलेंज करना, उसको मीन्स उसके कंपैरिजन में एक ऐसा डिटेक्ट ऐसा डिवाइस बनाना जो उसके शिप्स को उसके सबमरीन को डिटेक्ट करे. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल for challenge for India. Future enhancement क्या है? Acquisition of more P-8I aircraft, okay, like China, we recently purchased from USA. Indigenous development sonar system, be able to build from indigenous technology. Continue to focus on developing state-of-the-art sonar technology.
Then we have anti-submarine warfare. Okay, SWC project like expansion of anti-submarine warfare fleet, plan to add more ASW corvettes and helicopters, enhance operational reach एंड इफेक्टिवनेस, क्योंकि अब तो इनका डिप्लॉयमेंट, चाइनीज का डिप्लॉयमेंट पूरी जगह पर प्रेजेंट है. ओके, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, देन द पार्ट ऑफ जिबूटी को पोर्ट एंड ग्वादर पोर्ट, इवन बांग्लादेश, तो म्यांमार, सब जगह पे, तो दैट्स रिक्वायर्ड एंड डिजाइन फॉर ऑपरेशन एरिया विद डेप्थ कांस्टेंट वेयर द लार्ज शिप आर लेस इफेक्टिव. सबसे बड़ा चीज है कि सम ऑफ द एरिया वेयर शैलो डेप्थ, और उस जगह पे मींस डिप्लॉय करना इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज. दैट्स व्हाई India required a technology for improvement. Okay, so that we able to detect in future more Chinese submarine and able to counter presence of China in Indo-Pacific region. This is what the strategy of both US and India. Okay, so I hope this news help you to understand what is this news and what is Sonobuoys, why is important for India's seat. So we'll meet you in the next video and next topic. Okay, thank you, goodbye.